ಸಾಗರದಲೆಗಳ ರಂಗಿನ ಕಣ್ಣು ನೇಸರನಂತೆ ನಗುವವಳೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಕೇಶ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಾನ ಚಂದಿರನಂತ ಮುಗದವಳೆ, ಎಲ್ಲೆಂದಾನೋ ತೇಲಿ ಬಂದ ಗಾಳಿ ನೀ, ನನ್ನ ಕಾಯೋ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂನಿ, ಹಾಯೇ ನೀನೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ತುಂಬ ನೀನೇ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬೋ ಜೀವಮಾನ ನೀನೇ 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 ನನ್ನ ತುಂಬ ನೀನೇ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬೋ जीवमान नीने। हिमालय के वादियों में पाया जाता है एक खास किस्म का हिरण, साइंटिफिक नेम मॉस्कस मॉशिफेरस या मस्क डियर। हिंदी में ऐसे कहते हैं कस्तूरी हिरण। एक बार एक जंगल में एक कस्तूरी हिरण को एक बहुत सुंदर स्मेल का एक्सपीरियंस होता है। हिरण भूखा प्यासा ढूंढता रहता है, वो पूरे जंगल भागता रहता है इस खुशबू के तलाश में। फाइनली एक्सट्रीम एग्जॉस्शन से जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है, उसे रियलाइज होता है कि ये स्मेल तो उसके नाभि से आ रही है। कस्तूरी या फिर मस्क इज द नेम ऑफ दिस पावरफुल सब्सटेंस जो एक मेल मस्क डियर अपने नाभि से सीक्रेट करता है। जहां ये डियर्स इसे यूज करते हैं टू मार्क देयर टेरिटरीज इन द फॉरेस्ट। फैशन ब्रांड्स लाइक शनेल एंड डियर इसका यूज करते हैं अपने टॉप मेल परफ्यूम्स बनाने के लिए। मस्क का खुशबू ना इट्स नॉट फ्रूटी एंड फ्लावरी, इट्स डोमिनेटिंग। पीपल डिस्क्राइब दिस एज सेंसुअल, अर्थली, रॉयल, क्वालिटीज जो हम सब यूज कर सकते हैं टू ऑल्सो डिस्क्राइब द लैंग्वेज ऑफ आवर वीडियो, द लैंग्वेज ऑफ रॉयल्टी, जिसका परचम तमिलनाडु से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से गुजरात चारों तरफ लहरा रहा था। द लैंग्वेज जिसे मिले हैं सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ अवार्ड्स इन इंडिया आफ्टर हिंदी। द लैंग्वेज जिसका स्क्रिप्ट इतना एस्थेटिक है कि विनोबा भावे जी ने कहा था कि दिस इज द विश्व लिपिगढ़ रानी, मतलब द क्वीन ऑफ वर्ल्ड स्क्रिप्ट्स। अ लैंग्वेज जिसके कनेक्शंस ग्रीस से लेकर म्यांमार तक है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी कस्तूरी कन्नड़ा के बारे में। जानेंगे क्या बनाती है कन्नड़ा को बाकी भाषाओं से यूनिक, कैसे इवॉल्व हुई है भाषा, ऐसा क्या है इस भाषा में जो कन्नड़ा कल्चर को देती है इट्स डिस्टिंक्टिव पर्सनालिटी। सरी ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೋ ಕಸ್ತೂರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. With a total speaker base of about 6 crore people, Kannada is world's 31st most spoken language, far behind Telugu and Tamil, but ahead of Malayalam. It is the mother language of most people in every district of Karnataka, except for Dakshina Kannada, jahan Tudu zyada common hai. Visually, the first thing people notice about the Kannada script is that it looks very similar to Telugu, और इस वजह से people assume that Kannada must be similar to Telugu. ये बात सही है कि Kannada very much like Telugu is an Ajanta language. Ajanta का मतलब जिसमें काफी सारे शब्द vowel ending हो. So the assumption of them being similar is even stronger. But if you look closely, we find that in many ways Kannada is actually closer to Tamil than it is to Telugu. Let's take some examples. अगर मुझे कहना हुआ कि वो आ गया, so Tamil में you'd say avan vandan, Telugu में atanu bachadu, but Kannada में it's avanu bandanu. Notice यहाँ Kannada is closer to Tamil. तमिल में a lady is penned, तेलुगु में अम्माई और कन्नड़ा में हेन्नु. The number 10 is pattu in Tamil, padi in Telugu, but in Kannada it's hattu. Gold is pun in Tamil, bangaram in Telugu, but honnu in Kannada. Notice that in all these examples, even though Kannada vowel ending hai just like Telugu, the root words are actually closer to Tamil. Old Kannada mein the words were identical to the present day Tamil. Another thing we notice is that in many words, the p sound in Tamil shifts to this h sound in Kannada. Notice in the song that we listened before, the word in Kannada for flower was hoovu. This is nothing but p to h shift of poov in Tamil. Similarly, the Tamil word for milk, pal, in Kannada becomes halu. This is the reason why so many places in Karnataka have the suffix halli in them.
लाइक बोमनहल्ली और मराठहल्ली। हल्ली का मतलब होता है एक गांव। तेलुगु और तमिल में दिस इज पल्ली, लाइक सर्वपल्ली। दिस इज हाउ द एंशिएंट टाउन पंपा इवेंचुअली गॉट नेम्ड टू हम्पी। ये प टू ह का शिफ्ट को लिंग्विस्टिक्स में कहते हैं लेनिशन, व्हिच बेसिकली मींस सिंप्लीफिकेशन। दिस इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ डीबकलाइजेशन, व्हिच मींस कि जो साउंड्स लिप्स से बनते थे वो धीरे धीरे गले से बनने लगते हैं। देयर आर सम थियरीज प्रपोज्ड टू व्हाई दिस वुड हैव हैपेंड। कुछ को लगता है कि दिस ह साउंड साउंडेड एक्सोटिक बिकॉज इट वाज अ रेयर साउंड in Dravidian languages. Others think that it was a way to make communication more efficient because to shout words that start with her is much easier than to shout words that start with p. हम ये shift को बहुत सारे languages में देखते हैं. One major one being Japanese. For example, Old Japanese में pito meant a person and now the word hito means a person. Japan में this transition did not happen directly. There was an intermediate state, fito, which started with a f or a ver state. Kannada में there is some evidence that a similar intermediate state would have happened. For example, the word for 30 in Kannada is muvattu. Notice the word for 10 in Kannada is hattu. So technically this should have been muhattu. But the presence of muvattu means that the journey of per to her could have gone through va. A lot of words in Tamil that end with I also tend to end with a in Kannada. For example, Tamil mein dosai becomes dose in Kannada. Malai meaning pahad becomes male in Kannada. Malligai meaning jasmine becomes mallige in Kannada. So based on all this observation, you can say that at some point Kannada and Tamil were one language and eventually they diverged. ये clear हो जाता है if we take a look at the Dravidian family tree. Proto-Dravidian और the base language जो सारे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की जननी है वो सबसे पहले तेलुगु में स्प्लिट हुई। उसके बाद धीरे धीरे तुलु, कोडा, कोटा एंड देन कन्नड़ा ब्रांच होने लगे। अंत में जाके स्प्लिट हुए मलयालम और तमिल। तो इसका मतलब है by the time Telugu had become a distinct dialect, Kannada and Tamil were having one common evolution. This is why many people feel that Old Kannada, also called as Halegannada, is very close to Tamil. Kannada और Telugu में जो common features हम देखते हैं, including the script, they all happened because these regions were ruled by common empires. Vijayanagar Empire was, for example, a big lever of Sanskrit. During their rule, they made sure that both Kannada and Telugu were infused with a lot of Sanskrit sounds. This was also the time when Kannada and Telugu would have dropped the use of the core Dravidian sounds r and r, which are still retained in Tamil and Malayalam. Take the word for chicken for example. Tamil and Malayalam call it kori, but because the sound is not present in Kannada approximates it to koli, the retroflex l. Tulu goes a different route and calls it kori, and Telugu being the most shy in using retroflexes calls it kodi. So हम बेसिकली कह सकते हैं कि तमिल कन्नड़ा की स्कूल बेस्टी है, तमिल और कन्नड़ा साथ में ग्रो अप किए, और हम ये भी बोल सकते हैं कि तेलुगु इज कन्नड़ा's कॉलेज बेस्टी with whom she explored the world. Malayalam is the weird one with the nyas and the yas sounds जो कन्नड़ा में यूज ही नहीं होते। जहाँ कन्नड़ा बाकी लैंग्वेजेस के साथ इतने सारी चीजें शेयर करती है, कन्नड़ा is also very unique compared to other languages. Here's what I mean. Kannada is the only Dravidian language जिसमें inclusivity अब मौजूद नहीं है. There is no difference between inclusive we and exclusive we, something that is present in every other South Indian language. कन्नड़ा में ना कोई शब्द साउंड से एंड नहीं होता, something that we associate with a lot of South Indian languages. So in Telugu it is Anandamu, in Malayalam Anandam, but in Kannada Ananda. Telugu में संतोषमु, मलयालम में संतोषम, but कन्नड़ा में संतोषा. And finally, Telugu and Malayalam में नमस्कारम, but कन्नड़ा में नमस्कारा. The last quirk of Kannada जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता is how deeply Jainism has influenced the texture of Kannada. Take for example the word for bird, hakki. It might not seem at first, but it actually is derived from the Sanskrit word pakshi. Pakshi का प, hakki का ह बन जाता है. The new thing to notice is that ksha sound k बन जाता है. Double k. This is a feature that Kannada shares with Prakrit. जहाँ हिंदुओं के लिए लिटरेरी लैंग्वेज संस्कृत थी, वहीं जैन्स के लिए लिटरेरी लैंग्वेज प्राकृत थी. प्राकृत में हम बहुत सिमिलर पैटर्न्स देखते हैं. सत्य फ्रॉम संस्कृत becomes Sacha in Prakrit. Rakta becomes Ratta. Rashtra becomes Ratta. Dharma becomes Dhamma. Similarly, Kannada में भी Purnima becomes Hunnime. Vidya becomes Bijje. Kavya becomes Kabba. Vrishabha becomes Basava. And Parva becomes Habba. In all these changes, this heteroconsonant cluster is transforming into a homoconsonant cluster. Technical भाषा में this is called gemination. और किसी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज में हम प्राकृत का इतना डीप इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं देखते. गन्धेहि घाणाण सुहप्पयेहिं समच्चयाणं पि सुहप्पयेहिं
अज्जेमिणिच्चं परमट्ठसिद्धे सौवट्ठ सम्पादय सौवसिद्धे पुब्धेहि दिव्येहि सुवर्णयेहिं कौवेकयीसेहि सुवर्णयेहिम् अज्जेमिणिच्चं परमट्ठसिद्धे सौवट्ठ सम्पादय सौवसिद्धे। एक और प्राकृत feature which we spot here is the v sound becoming a b sound. Recall how Bangla is also shaped by Magadhi Prakrit and उसमें भी यही होता है। संस्कृत का शब्द काव्य बांग्ला में बन जाता है काब्बो, very similar to Kannada kabba. The word for house in Tamil is veedu. कन्नड़ा में ये बन जाता है बीडू. तमिल शब्द for mouth is वाई, जो कि कन्नड़ा में बन जाता है बाई. जैनिज्म का छाप कन्नड़ा और कर्नाटका कल्चर में काफी डीप था. We see this in the vegetarian percentage map of India, जहाँ कर्नाटका has the most number of vegetarians in all of South India. जैनिज्म का कर्नाटका के हिस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है हम ये समझ सकते हैं फ्रॉम द फैक्ट कि चंद्रगुप्त मौर्य जी अपना देह त्याग किए थे कर्नाटका के भूमि पे. दिस देह त्याग समाधि प्रोसेस इज कॉल्ड सल्लेखना इन जैनिज्म. उन्होंने अपना सल्लेखना किया था चंद्रगिरी हिल में, विच इज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ श्रवणबेलागोला. वही टाउन जहाँ पे आपको मिलेगा द गोमटेश्वरा स्टैचू. दिस राइट हियर इज बाहुबली. जैनिज्म में द सन ऑफ ऋषभनाथ, जो कि जैनिज्म के फर्स्ट तीर्थंकर थे. कन्नड़ा में लिखी सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन भी हमें मिलती है हल्मिदी में, जो कि श्रवणबेलागोला से अबाउट 100 किलोमीटर्स दूर है. हल्मिदी इंस्क्रिप्शन इज डेटेड टू बी अराउंड 450 AD to 500 AD, which makes Kannada at least 1500 years old. यहाँ पे हम एक झलक पाते हैं कि how old Kannada might have sounded like. नोटिस कीजिए कि इस शिलालेख के पहले दो पंक्ति संस्कृत में और बाकी ओल्ड कन्नड़ा में. The inscription mentions the Kadamba dynasty, which was the first native Kannada dynasty to rule Karnataka. वो starting में feudal lords थे of the Tamil Pallavas, और वो कर्नाटका के first dynasty थे जिन्होंने administration में कन्नड़ा use किया. The founder of the Kadamba dynasty was मयूर शर्मा. वो एक ब्राह्मण scholar थे जो कि एक बार कांची गए थे अपने studies के लिए. वहाँ पे उनका मजाक बनाया गया था by some Pallava horsemen, and तब उन्होंने अपना एक दृढ़ निश्चय लिया कि वो एक योद्धा बनेंगे. And that is how he founded the Kadamba dynasty. ಯಾವ ಕದಂಬರ ವಂಶವೃಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಿರ್ನಾಮವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆಯೋ ಆ ಮಹಾವಂಶವೃಕ್ಷವೆಂದು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಪಲ್ಲವರ ಸೊಲ್ಲಡಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ನೆಲದಿಂದ ಪಡಿದೋಡಿಸಿ ವೈಜಯಂತಿಯ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮರುಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಮುಹೂರ್ತ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಪೌರುಷ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾಹಸ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದೇ ಹೊರತು ನಿನ್ನಂತಹ ಕೋಟಿ ಪಲ್ಲವರ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಳಿಯದು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಮಂತ್ರ, ಇದೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. Just like Mayur Sharma, the Kannada culture is a warrior poet culture. Chalukya rule के दौरान we see this unique tradition of Veeragalu or hero stones that were used to commemorate the death of warriors who died in the battles, and also stones to commemorate passing away of saints, particularly Jain saints who were observing their Sallekhanas. These hero stones usually had 3 or 5 panels, with the top one being dedicated to worshipping gods, the middle one of ruling a kingdom, and the bottom one of fighting a war. So, the 3 different dimensions of a king. In all these stones, there used to be inscriptions of Kannada. ऐसा ही एक इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है आईहोले में, जहां मेंशन है कि चालुक्य साम्राज्य से सबसे नोटेबल फिगर थे इमडी पुलकेशिन II, जिन्हें याद किया जाता है फॉर डिफीटिंग हर्षवर्धन, जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया के सबसे पावरफुल रूलर थे तब. चालुक्यस के बाद आए द राष्ट्रकूटास, जिन्होंने अपने आप को बोला होगा रट्टकुटा. अगेन द प्राकृत इन्फ्लुएंस एट फुल डिस्प्ले. मिलिट्रीली राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के सबसे सक्सेसफुल राजा थे गोविंदा III. ही वेंट बाय टाइटल्स लाइक जगतुंगा, पृथ्वी वल्लभा, प्रबुद्धवर्षा. उन्होंने कॉन्कर किया था फ्रॉम कन्याकुमारी इन द साउथ टू कन्नौज इन द नॉर्थ. द कॉपर इंस्क्रिप्शंस एट संजन पोएटिकली मेंशन कि गोविंदा जी के हॉर्सेस ड्रैंक फ्रॉम द icy streams of Himalayas, while his elephants tasted the sacred waters of Ganga. Complementing his warrior nature, Govinda ji के बेटे अमोघवर्षा exudes the poetic nature of Kannada. He is remembered for ruling Karnataka for 64 long years. He supported several Kannada and Sanskrit scholars, including the great Jain mathematician Mahaviracharya, Jinasena, Veerasena, and also Sri Vijaya. Sri Vijaya ji was a Kannada linguist, and उन्होंने compose किया था Kavirajamarga, the first work on Kannada poetics. Let's listen to the most famous section of Kavirajamarga. ಕಾವೇರಿಂದಮ ಗೋದಾವರಿ ವರಮಿದ್ದ ನಾಡದ ಕನ್ನಡದೊಳ್
ಭಾವಿಸಿದ ಜನಪದಂ ಅದರೊಳಗಂ ಕಿಸುವಳಿಲಾ ವಿದಿತ ಮಹಾಕೋಪಣ ನಗರದ ಪುರಿಗಿರಿಯ ಸದವಿಸ್ತೃತ ಮಪ್ಪಂಕುಂದದ ನಡುವಣ ನಾಡೇ ನಾಡೇ ಕನ್ನಡದ ತಿರುಳ್. राष्ट्रकूटा और गंगा डायनेस्टी में ही पेट्रोनेज मिला था टू द रत्नत्रय और द 3 gems ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर, पंपा, पोन्ना और रन्ना. पंपा जी ने महाभारत को कन्नड़ा में रीइमेजिन किया, मेकिंग अर्जुना अ जैन हीरो. दोनों चालुक्य और राष्ट्रकूटा एम्पायर महाराष्ट्र रीजन को कंट्रोल करने के बावजूद उन्होंने मराठी कल्चर को कभी सप्रेस नहीं किया. इंस्टेड दे अलाउड द ब्लेंडिंग ऑफ कन्नड़ा एंड मराठी कल्चर्स. जैसा कि हमने हमारी मराठी वीडियो में देखा था, बोथ दीज लैंग्वेजेस यूज द ळ साउंड अ लॉट. दोनों लैंग्वेजेस में रिलेशनशिप के नेम्स आर आल्सो वेरी कॉमन, लाइक अक्का फॉर सिस्टर और अन्ना फॉर ब्रदर. काफी सारे कॉमन वर्ड्स के नाम भी सेम है. फॉर एग्जाम्पल होन फॉर गोल्ड और तुपा फॉर घी. ಬಸಾ ಹಾ ಬಸ್ಸಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಟ್ರೈನು ಮೈಸೂರಿಂದ ಶರಾವತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. and I am Marathi Express from Kolhapur. Basa in Marathi means please sit down. Even the most revered Lord Vitthal in Pandharpur is commonly referred to as Kannada Raja Pandharicha. ವೇದ नाही नाही कळला अंत पारयाचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा. It is believed that the idol placed in Pandharpur was brought from Hampi when the temple in Hampi was plundered by Bahmani invaders. The name Vitthal itself seems to be a Kannada transformation of the word Vishnu. रट्टकुटा साम्राज्य के बाद आए द होयसालास, और होयसाला रूल के दौरान वैष्णविज्म, शैविज्म और जैनिज्म सब इक्वल इंपॉर्टेंस पाए. Queen Shantala Devi herself embodied this unique cultural fusion. She was a Jain queen who commissioned the construction of Hindu temples. These temples at Belur and Halebeedu, they aren't just architectural marvels, but they are literally poetry in stone. And they uniquely combine North Indian and South Indian styles of temple construction. इसी atmosphere में शुरुआत हुआ था of the Vachana movement, which you can think of as Kannada's own revolution in spiritual thinking. इस movement को lead किया था leaders like Basavanna और Akka Mahadevi ने, जिन्होंने complex संस्कृत के बजाय simple कन्नड़ा को यूज किया था to write compositions that would speak directly to the heart of the people. ಕಲ್ಲನಾಗರ ಕಂಡೊಡೆ ಹಾಲನಿರೆ ಎಂಬರು ದಿಟದ ನಾಗರ ಕಂಡೊಡೆ ಕೊಲ್ಲೆಂಬರಯ್ಯ. इसी मूवमेंट से जन्म लिया था लिंगायतिज्म ने. इन अ वे लिंगायतिज्म ब्लेंडेड जैनिज्म एंड शैविज्म टू क्रिएट दिस न्यू यूनिक कस्तूरी कल्चर. Lingayats reject all kind of scriptural authority. They don't accept the Vedas, Puranas, astrology or even priesthood, and they recommend a personalized experience of the divine. ಉಲವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ಉಲ್ಲವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ನಾಯೇನ ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ ನಾನೇನ ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೆ ಕಂಬವಯ್ಯ ಎನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲವಯ್ಯ ಉಲವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು. इसी से पैरेलल Madhvacharya ji, who was born in Udupi as a Tulu Brahmin, he was coming up as a fierce critic of Advaita Vedanta. उन्होंने द्वैता स्कूल ऑफ फिलोसफी को फाउंड किया था and he was responsible for practically birthing the Bhakti movement. उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था on Chaitanya Mahaprabhu in East India and Sri Vallabhacharya in West India. 1400s के आते आते conditions were just right under the Vijayanagar Empire for Vaishnavism to rise again in South India. तमिलनाडु में अलवर सेंट्स, कर्नाटका में मध्वाचार्य जी और वीरशैव यानी कि लिंगायतिज्म के प्रोमिनेंस के बीच में जन्मा था हरिदास मूवमेंट. हरिदास मूवमेंट वाज अ सोशल रेवोल्यूशन टू मेक भक्ति मोर एक्सेसिबल थ्रू वेरी सिंपल पोएम्स. इसी मूवमेंट से जन्म लिया था कार्नेटिक म्यूजिक सिस्टम ने, व्हिच वाज लेड बाय द हरिदास पुरंदरदास. ಇನ್ನುದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ
17th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर के बाद कन्नड़ा का मॉडर्न एरा रीच्ड इट्स पीक अंडर द वोडियार्स ऑफ मैसूर। नलवाड़ी कृष्णराजा वोडियार जी ने दिखाया कि ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस कैन इंडीड गो हैंड इन हैंड। उन्होंने न केवल एशिया का लार्जेस्ट डैम बनवाया बट ऑल्सो वुमेन को वोटिंग राइट्स दिए। पूरे इंडिया से 27 साल पहले उन्होंने बेंगलुरु में IISc का स्थापना किया एंड अंडर हिज रूल 1905 में बेंगलुरु बिकेम द फर्स्ट सिटी इन एशिया टू गेट इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स। इंडिपेंडेंस के बाद मैसूर वाज वन ऑफ द ओनली प्रिंसली स्टेट्स जिसने विलिंगली इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया था। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि 1922 में कृष्णराजा वोडियार जी ने टैगोर को इनवाइट किया था एज अ स्पेशल गेस्ट फॉर द दशहरा फेस्टिवल इन मैसूर। इट वाज देन दैट टैगोर वुड हैव हर्ड द मैसूर रॉयल एंथम कायो श्री गौरी and he was so enchanted by it that he made a Bangla version called Anandoloke Mongololoke. Let's listen to both versions. कायो श्री गौरी करुणालहरी तोयजाक्षी शंकरीश्वरी आनंदलोके मंगला लोके বিরাজো সত্য সুন্দর। कुछ कस्तूरी की तरह ही कन्नड़ा का फ्रेग्रेंस भी हमारे कलेक्टिव सबकॉन्शियस का एक अभिन्न पार्ट बन चुका है। मालगुडी डेज ने हमें कर्नाटका के रूरल वाइब से परिचित किया। मैसूर सैंडल सोप बिकेम सिनोनिमस विद इंडियन लग्जरी और मैसूर पाक के मिठास से तो पूरा इंडिया वाकिफ है। कस्तूरी की ही तरह कन्नड़ा का इन्फ्लुएंस वाज ऑलवेज सटल, असर्टिव विदाउट बीइंग अग्रेसिव। दिस इज व्हाई बेंगलुरु टुडे इज द सिटी विद द मोस्ट नंबर ऑफ मदर टंग्स। लेकिन हर कस्तूरी डियर को अपनी टेरिटरी की चिंता तो होती है। आज के कर्नाटका में देयर इज अ ग्रोइंग डिजायर टू प्रोटेक्ट दिस कल्चरल एसेंस। 2022 में पास हुआ था द कन्नड़ा लैंग्वेज एक्ट। इसमें गाइडलाइंस सेट हुए थे फॉर द ग्रेटर यूज ऑफ कन्नड़ा इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरिंग कि स्टेट के हर नेम बोर्ड में 60% ऑफ द सरफेस एरिया में कन्नड़ा ही यूज होगा। नॉन नेटिव्स को ये रूल्स अग्रेसिव लगते हैं। वी कीप हियरिंग ऑफ क्लैशेस बिटवीन नेटिव्स एंड आउटसाइडर्स ओवर द इशू ऑफ लैंग्वेज, बट कर्नाटका के लोगों के भी अपने फियर्स हैं। You see, in many regions of Karnataka, Kannada is not a majority language. अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी बन जाने का एक जेन्युइन फियर है कर्नाटका के लोगों में। शायद इस टेंशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1956 से पहले कर्नाटका कोई एक यूनिट नहीं था। It was split between the princely states of Mysore, Coorg, Hyderabad, the Bombay Presidency and the Madras Presidency. ये डिवाइडिंग लाइंस अभी भी लोगों के मेमोरीज में फ्रेश हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्दर्न रीजन्स को मैसूर स्टेट का नाम एक्सेप्टेबल नहीं लगता था, which is why in 1973 स्टेट का नाम मैसूर से कर्नाटका रख दिया गया, इंस्पायर्ड बाय द एंशिएंट नेम ऑफ द रीजन जिसका जिक्र महाभारत के भीष्म पर्व में भी है। सो मे बी इट्स अंडरस्टैंडेबल व्हाई 1st of November is celebrated as the Karnataka Rajyotsava with such huge enthusiasm. Kannadigas को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था to get their state recognized. You see, इंडियन पिक्सल्स पे हम ये बात हमेशा रिआइट्रेट करते हैं, एक लैंग्वेज बस एक कम्युनिकेशन का तरीका नहीं होता, वो एक किस्म का टाइम कैप्सूल होता है जो कि हमारे पास्ट एंसेस्टर्स हमें गिफ्ट करते हैं। कन्नड़ा लैंग्वेज कंटेन करती है अपने आप में कर्नाटका का इतिहास, कर्नाटका की गरिमा। When people want you to speak their language, the underlying desire is that आप उनके बारे में जानो, उनकी कहानियां सुनो, उन्हें अपना मानो। Languages should always be a way to bridge people, not to divide people. This is why initiatives like these leaflets to use basic phrases and autos is such a great way to start. जिस तरह एक कस्तूरी डियर अपने टेरिटरी को मार्क करती है, not to exclude but to declare its presence, Kannada too seeks recognition. कन्नड़ा की कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने अंदर के कस्तूरी को रिकॉग्नाइज करें, दुनिया में अपना खुशबू बिखेरें और अपनी अहमियत भी समझें। यही कस्तूरी की कहानी है, यही कन्नड़ा है। Thank you so much guys for watching our video. This was one of my favorite videos to make. I'd love to give a shout out to all the amazing creators whose work I used in this video and to my dear friend Samarth who helped me with the bulk of research for this video. Here's a shout out to some of our YouTube members. Thanks to you we can make these videos. So thank you so much Gandev68, Dreadful Bodyguard, Deepit Purkayasta, Subhashri Patnaik, Pavan Pamidimarri, Nikhil Angad Bakshi, Ashwini Pandey, Abhilash Ghosh, Ganesh Putran, Milandeep Singh, Vikas Kant, Bishwarup Chatterjee, Aniket Chatterjee, Suvardhan Jonalagadda and Honey Man. Thank you so much for supporting Indian Pixels. If you liked the video and would like to see more of such videos on languages and culture, please consider subscribing to Indian Pixels. Sari, matte se gada. I'll see you on the next video. Bye bye.